Hello students, today we will discuss about a new topic, uh, electron volt, which is very famous unit and very important unit in atomic and nuclear physics. Uh, okay, so today we will discuss about electron volt. Okay, so see here, what do you mean by 1 electron volt? Okay, लिख देते हैं इसे 1 electron volt. Okay, for this we use the formula of electrostatic potential. Okay, देखिए जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो आपका होता है V इक्वल्स टू W बाय Q. ओके, सपोज कर लीजिए कि आप डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B. Then this potential can be written as VB minus VA. Okay, suppose test charge Q naught is 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, देखिए मैं यहां पर फुल वैल्यू यूज करूंगा 1 इलेक्ट्रॉन. एंड एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है E के इक्वल, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 E. ओके, और सिंपली आप ये भी लिख सकते हो E. ओके ना, तो देखिए एंड VB minus VA, that is potential difference between point A and B, is 1 volt. Then according to this formula, WA to B will be equals to Q naught into VB minus VA. Okay, after putting the values of Q naught and VB minus VA which is mentioned above, then we get E. और ऐसे लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन and multiply by 1 volt. Okay, and then 1 by 1 is 1, which is equal to electron 1 electron volt. Okay, in short it is denoted by 1 eV. That means 1 electron volt or electron volt is nothing but it's a special type of work done. Special type of work done. That means we can say that electron volt is also a unit of work done. That means energy. Okay, here see that the potential difference between these 2 points is 1 volt and charge is 1 electron. When we put any charge particle, suppose this electron, between these 2 points A, B, and the potential difference between these 2 points is 1 volt. Sorry for this. Suppose this is 5 volt and this is 4 volt. Okay, then the potential difference between these points is 1. Okay, then you know very well पॉजिटिव चार्ज, और इस तरीके से ले लीजिए आप,
the direction of electric field is equal to r cap del v by dv by dr. These are the decrement term, and negative sign shows that direction in which v is decreased with respect to r is known as direction of electric field. ओके, मतलब देखें यहां पर यदि आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हम इस प्रकार शो करेंगे. हमने आपको बताया था कि v जो चेंजिंग होती है वो हमेशा इंक्रीमेंट डायरेक्शन में ली जाती है. तो ये इंक्रीमेंट डायरेक्शन में है. निगेटिव से हम ये शो करता है कि यदि इंक्रीमेंट है तो निगेटिव से अप्लाई करोगे तो डिक्रीमेंट बन जाएगा. तो इसकी एक ही डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि जिस डायरेक्शन में आपका ये v डिक्रीज होगा. अब आप देखिए डिक्रीज किस डायरेक्शन में होता है, दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा. अब आप जानते हैं कि फोर्स आपका होता है इक्वल्स टू Q इंटू E. According to the definition of electric field, if charge Q is positive, then the direction of force will be same as electric field. If the charge is negative, then the direction of force will be opposite to the applied electric field. Here the charge is one electron, which is negative charge, so the force acting on negative charge or electron will be the opposite direction of electric field. That means this is the direction of force. If any force acts on the charge particle, then this charge particle will be accelerated. क्या होगा? Due to this force, चार्ज क्या होगा आपका? एक्सीलरेट. और चार्ज आपका एक्सीलरेट होगा तो मोशन में होगा, और जब वो मोशन में होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी. That means we can say that electron volt is that amount of work done or kinetic energy or energy और काइनेटिक एनर्जी. वो भी कौन सी फॉर्म है? काइनेटिक एनर्जी की. एनर्जी में कौन सी फॉर्म? काइनेटिक. तो दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी विच इज गेन्ड बाय an electron between two points which have potential difference equal to 1 volt. ओके, आइए डेफिनेशन नोट करते हैं. आई थिंक आपको क्लियर हो गया हुआ कंसेप्ट. दैट इज 1 electron volt is that amount of work done or energy or kinetic energy which is gained by an electron with in an electron by acceleration due to one
volt potential difference. Okay, that means 1 electron volt is that amount of work done or energy or kinetic energy which is gained by an electron due to electron by acceleration due to 1 volt potential, या ऐसे लिख सकते हैं due to acceleration, sorry for this, due to acceleration in 1 volt potential difference. ओके, तो ये जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी की जो यूनिट है, हम इसका कन्वर्जन करेंगे आपका एनर्जी में. एनर्जी की यूनिट क्या होती है आपकी? जूल. तो अब देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट थिंग इज रिलेशन बिटवीन joule and electron volt. Okay, so see here, 1 electron volt is equal to 1 as it is, and the value of E is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb volt. And you know very well this is the unit of work done, because W equals to VB minus VA into Q. So see here, in SI unit system, unit of this is volt and unit of charge is coulomb. So that this is, and in SI unit system, unit of work done is joule. Then joule will be equivalent to the volt coulomb. So we can put here 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Thus we can say that electron volt is very small value with respect to joule. So this is a negligible value with respect to daily life phenomena. Okay, so this unit is very important in case of atoms and atomic physics and molecular concepts. Okay, so we use this unit in very large detail in the part of modern physics. So another units, another forms of these units. 1 kilo electron volt, which is equal to 1 into 10 to the power 3 multiply, sorry for this, electron volt equals to 10 to the power 3 multiply by what is the value of E, and that you can put 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule, which is equal to 1.6 into 10 to the power minus 16 joule. Okay, and another unit is, this unit is very important in case of electrons in the orbits of atoms. 1 million electron volt, that means 10 to the power 6 electron volt, which is equal to 10 to the power 6 into 1.6 into 10 to the power minus
19 joule and equals to 1.6 into 10 to the power minus 13 joule. A second conversion of 1 electron volt. And is third is 1 billion electron volt will be 10 to the power 9 electron volt. चलिए 10 to the power 9 multiply by 1.6 into 10 to the power minus 19 joule is equal to 1.6 into 10 to the power minus 10 joule. Okay, so these are three important forms of electron volt which is useful in case of atomic physics in different parts. Electron volt used for electrons in the orbits of an atom. Kilo electron volts used for the electrons near the nucleus of the atom, and million electron volts used for the study of structure of nucleus to enter any particle inside the nucleus. Okay, and the last is very important in case of nuclear particles in cosmic rays. Okay, तो यहाँ पर ये इसके थोड़े से कन्वर्जन थे, आपको क्लियर हो गए होगा आई थिंक। और 12th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स में, क्योंकि वहाँ पर जनरली जो न्यूमेरिकल्स आपके इसी के बेस पर किए जाते हैं, तो 12th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन आस्क भी कर ली जाती है, तो इसलिए इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, like and share. Okay, thank you. Comment on my YouTube channel. On if you have any doubt, please ask me. Okay, thank you.